मैडम इनसे कितनी वसूली होना है? फिर इसकी 2,50,431 वसूली होना है सर इसमें। 2,50,431। 39,000 रुपए के लिए कितना कंटेस्ट करेंगे आप? कंटेस्ट नहीं करता सर, वो एक लॉ पॉइंट है, उस पर मैं आपकी 15 साल से ग्रेचुटी रुकी पड़ी थी सर। शुड बी हैप्पी इट इज रिलीज्ड। अच्छा बताइए, अगर आपको नहीं पे करना था तो आपने 2019 में एनओसी क्यों ली? सर पेमेंट करके वो डिपार्टमेंटल एक एक्शन था सर, हमको उस समय पैसे की जरूरत थी, तो इन्होंने एक अंडरटेकिंग सर हमसे ली थी कि हमको आप ग्रेचुटी का अमाउंट दे, हमको ग्रेचुटी 65 पढ़िए मैडम। ओआईसी है Manoj, she's the OIC, Manoj. ऑन विच पोस्ट यू आर पोस्टेड? किस पद पर हैं आप? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मैडम इनसे कितनी वसूली होना है? फिर इसकी 2,50,431 वसूली होना है सर इसमें। 2,50,431 होना है कि हो गई है? होना है सर ये। आपने एक लेटर इशू किया था, आप देखिए आपका लेटर है R2 14/7/2024। इसमें आपने लिखा है कि वसूली योग्य राशि है 4,12,345। उसमें से कुछ हो चुकी है सर, इन्होंने जमा कर दी। R2 Manoj, थोड़ा सा उसमें डिस्प्यूट है एक लास्ट अमाउंट को लेकर के. She has brought some other documents. In fact, we were trying to clarify that. इतना ये इन्होंने फाइनल बताया. That can be made. वेतन, अधिक वेतन भुगतान अलग हो गया 1,20,028 रुपए, उसके ऊपर इंटरेस्ट है 91,000 रुपए, यस सर, है ना? यस सर, वो तो कनेक्टेड पिटीशन में है। यस सर, यस सर, इस पिटीशन में है मिसलेनियस एडवांस। विविध अग्रिम इनका कुल 39,000 रुपए बचा है। यस सर, ओनली। तो ये कब पे किया इन्होंने? सर इन्होंने पे नहीं किया सर, इसकी कोई एनओसी नहीं है सर हमारे पास। बाकी जो तो आप देखिए, आपके यहाँ से मैडम एक मिनट, आपके यहाँ से एक लेटर लिखा जाता है कि इन्होंने मिसलेनियस एडवांस 3 लिए हैं 2,11,429 के, और उसके ऊपर आपने ब्याज लगाया है, और नहीं, ये अधिक की राशि अलग है, मिसलेनियस एडवांस अलग है। मिसलेनियस एडवांस हैं आपके 1,61,914, 2,27,500, 11,000, ये लगभग कुल मिला के 2 लाख रुपए हो रहे हैं। सर ग्रेचुटी और ओरिजिनल ग्रेचुटी इंक्लूड नहीं की है, वो भी इसमें इंक्लूड होगी सर। नहीं, अभी तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ मच इज टू बी रिकवर्ड। ये 3 आपने एडवांस लिए हैं, 161, 1.61, 0.27 और तीसरा कितना है? 11,000। इनका नोटिस नहीं, अगर ये नोटिस इनके पास है तो वो मुझे Manoj, as per लगभग 1,99,000, 2 लाख रुपए करीब हो रहे हैं। इसमें 2,50,000 जो उसमें लेटर में मेंशन। अब आप इसमें 39,000 बोल रहे हैं मैडम। अभी हम अधिक वेतन की बात नहीं कर रहे हैं। आपने 3 मिसलेनियस एडवांस के, आपने इसमें आप देखिए R2 का लेटर देखिए 14/14 का। सर जो इसमें कालपन यंत्री बरियारपुर क्रमांक 2 छतरपुर की सर जो राशि है 1,61,914, इसकी सर मेरे पास एनओसी है इसकी। कब की है? इसकी मेरे पास सर ये P5 में जो सर इन्होंने दिया है, ये उसी की सर ये एनओसी हो जाएगी। मेरे पास जो 1 और 2 नंबर में सर ये डिवीजन नौगांव और डिवीजन छतरपुर की राशि है 11,473 और 27,500। इन्होंने 5/8/19 को जमा कर दी। 5/8/19 को जमा कर दिया पैसा जी, 5/8/19 P5 से। ये इसकी राशि है, इसकी नहीं है राशि, इसकी नहीं है। अब आपके उसके 39,000 रुपए बचे हैं एडवांसेस को लेकर। यस सर, 39,002 सर बच्चे। 39,002 जी। 27,001 और 11,001, 39,002 ऐसे हो रहे हैं ना? दोनों को ऐड करके सर ये राशि 39,002 हो रहे हैं ओनली सर। और ये 1,61,000 की जो सर एनओसी है मेरे पास। एनओसी 2019 की है। जी जी जी। 2019 में बेबाक हो गया है। जी जी। और इसके अलावा वसूली है मंथली जो सैलरी इनको ज्यादा उसकी अभी कनेक्टेड पिटीशन है। जी सर, वो 2011 से सर। उसमें बताइए क्या है? ये 8909 मतलब टीपीओ में इन्होंने जो अमाउंट है सर वो 1,20,000 का डिस्क्लोज किया था, तो हमने उसी पार्ट को चैलेंज किया था सर 8909 में। इनका वो जो R2 है उसमें कितना अमाउंट है? इसमें है 1,22,000। जी, इतना बोल रहे हैं सर। मतलब दिस 1,20,028, ठीक है। मतलब आफ्टर 2 years ऑफ द रिटायरमेंट मैडम। अब बताइए इनका रिप्लाई क्या कहता है, किस बाबत रिकवरी है? इनका रिप्लाई सर, the pay revision which was made applicable prior to his retirement with effect from 18/7/2008 was not granted to him prior to his retirement, but was granted after the retirement.
at the time of retirement, madam. The Treasury, while revising the pay scale, it is noticed that the earlier pay revision. कहाँ पढ़ रहे हैं दुबे जी? सर मैं पेज ये रिटर्न में सर ये जो 8909/2013 की पिटीशन के पैरा 5 में पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है। इसका तीसरे सेंस, द ट्रेजरी while revising the pay scale, it is noticed that the earlier pay revision granted to the petitioner was erroneously calculated, which culminated excess payment is account. Accordingly, the said amount was calculated, which came into rupees so and so. The said amount since enjoyed by the petitioner, therefore, as per government rules, that same is required to be recovered from the 12% interest. 12% interest भी इनने लगाया सर, and that was challenged on the ground. Any undertaking? No, there is no undertaking. They have simply said. आपकी पोस्ट क्या थी? सर हमारी पोस्ट थी सब इंजीनियर। सब इंजीनियर थे, WRD वाटर रिसोर्स। मैडम दिस रिकवरी हैज टू गो। आपको 39,000 रुपए केवल बचेगा, वो रिकवर करिए आप, तो एडवांस है, गवर्नमेंट बनी है तो आपको देना ही पड़ेगा। But after it's the period of that recovery is so long, मतलब 2 years after that is not permissible, मतलब। ये रिटायर्ड व्हेन? सर रूल 66 में सर स्पेसिफिकली है कि 6 एडवांस है दुबे जी, एडवांस है जी। ये तो एक तरह से उधार है, कर्जा है सर। एक बार 66 ये तो आपको यू शुड थैंक सर, दे हैव नॉट प्रोसिक्यूटेड यू। मतलब एक बार रूल 66 देख लें सर, हाँ ऑफ द पेंशन रूल्स, whatever that मतलब I read out that मतलब the rule 66 specifically says that the furnishing of surety by retiring government servant, if any of the government dues other than those referred into the rule 65 remain unrealized and unassessed by any reason, the retiring government servant may be asked to furnish in form 8 it is surety of suitable permanent government servant holding। श्योरिटी की बात तब आएगी जब असर्टेन्ड नहीं है, तो असर्टेन होगा ही ना, इन्होंने असर्टेन करके अमाउंट खोल दिया। मतलब द टाइम पीरियड इज लिमिटेड। इसके आगे मैं पढ़ देता हूँ सर। The office may write to the audit officer to release the pension gratuity if the demand for any amount due against the retired government shall not made within 12 months of his retirement. The officer concerned in the PWD and PWD, as the case may be, would be held personally responsible for the loss incurred by the government. So here, my lord, they have to recover this amount by executing the form 8 within 12 months. So that time period is there, my lord. They have issued the PPO after 2 years of retirement. And my the enhanced pay scale was, my lord, the pay revision rules. Pay revision, we are not talking about pay revision. Yes, my lord. But with that, I'm just so, my lord, the ascertainable amount which the time period is there. इसके तहत इनको 12 महीने में अगर ये करते सर तो that will be executable. Now, my lord, after 2 years, 2011 में सर हमने ये पिटीशन लगाई थी that when the PPO was issued, and that first time that PPO is mentioning, my lord, that this amount is here. And when we have filed the second petition, my lord, second time they have come forward with the shelter that there is a miscellaneous advance. सर ये इसमें इस 66 के तहत इनका टाइम पीरियड भी चार्ज से 17 इयर्स में। जी 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 66 में क्या है बताइए? 66 में। अच्छा बताइए, अगर आपको नहीं पे करना था तो आपने 2019 में एनओसी क्यों ली सर? पेमेंट करके वो डिपार्टमेंटल एक एक्शन था सर। हमको उस समय पैसे की जरूरत थी तो इन्होंने एक अंडरटेकिंग सर हमसे ली थी कि हमको आप ग्रेचुटी का अमाउंट दे, हमको ग्रेचुटी 65 पढ़िए सर। मैडम 65 says the duty of every retiring government servant to clear all government dues because the date of his retirement. That's my submission is that, madam, that has not been। चलिए ठीक है, इसमें ऑर्डर करें, लिखिए दी प्रेजेंट पिटीशन, दोनों में कॉमन ऑर्डर कर दिया। मैडम इसमें कोई रिकवरी का मतलब the duty the judgment passed by the full bench, madam. I am just relying on that. ठीक है ना मैम? इसमें लिखिए दी प्रेजेंट पिटीशंस हैव बीन फाइल्ड बाय एंड ए रिटायर्ड सब इंजीनियर ऑफ वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हु रिटायर्ड ऑन 30/4/2010 point. WP number 15903 of 2020 has been filed in the matter of non-payment of gratuity and challenging order annexure P1, whereby it has been intimated that on account of pendency of 2 writ petitions before this court, payment cannot be made to the petitioner. Next, इसमें लिखिए WP number 8909 of 2013 has been filed challenging the recovery of amount of rupees 120028 and 91401 from the petitioner towards erroneous payment of wrongful fixation made to the petitioner. Point. Made to the petitioner in the year 2008 when he was in service. Point.
Next. From a perusal of the next, the learned counsel of the petitioner submits that the entire gratuity of the petitioner, entire gratuity has been withheld. My The intent. petition has been withheld and has not been paid since 30/4/2010. Point. It is on account of certain dues ascertained to the petitioner by way of advance and also on account of the recovery ordered from the petitioner, which were more than, which as per the respondents are more than the total amount of gratuity. How much is the gratuity? As per my instruction, it is 6 lakh something. PPO कहाँ है आपका? TPO, my lord, Sir, 6,05,500 6,05,000 5,550 प्लीज. नहीं, more than नहीं. Point, as per the petitioner, the gratuity amount is rupees 6.05 lakhs and the entire recovery under all the heads as per the respondents is rupees 4.12 lakhs, and therefore there has been no just cause for withholding the gratuity from the petitioner. Point. Next, upon hearing the rival parties, next is MS Lata Verma, Executive Engineer, WRD Chhatarpur, is present in the court to assist the government advocate on the basis of record available in her office. Point. Next, upon hearing the counsel for the rival parties and on perusal of the documents placed on record, it is seen that the recovery against the petitioner can be divided into two heads. Point. First is the recovery against advances taken in respect of 3 different projects of the department while he was in service, and these recoveries are as under ABC कर दीजिएगा. A, WRD division Nagaon, rupees 11473. B, WRD division Ormil project, Ormil project, WRD division Chhatarpur, rupees 27,529. And C, WRD division number 2 Chhatarpur, 161914. In this manner, a total of rupees about 2.00 lakhs was sought to be recovered from the petitioner towards various miscellaneous advances while he was in service. Next, apart from that, an amount of rupees 120028 with interest of rupees 91401, that is total rupees 211429, was sought to be recovered from the petitioner towards various towards erroneous fixation, WEF erroneous fixation with effect from the year 2008. Point. Next, so far as the 3 miscellaneous advances are concerned, it is not in the executive engineer MS Lata Verma present in the court submits that the amount at column C, small c has already been deposited by the petitioner in the year 2019, and she duly submits that as per document annexure P5, NOC has been issued in respect of amount mentioned in clause C, small c above, and therefore the department requires to recover a total amount of rupees 39002, which is towards the miscellaneous advances mentioned at clause small a and small b above. Point. Next, so far as the recovery of erroneous pay fixation is concerned, the same is in challenge in WP 8909 of 2013. Point. The state has filed reply in the said petition, and it has been contended in para 5 thereof that the fixation of the petitioner was made with effect from 18/7/2008, which was erroneous, and therefore it has to be recovered with 12% interest. Point. The respondents have not relied upon any misrepresentation, suppression, or fraud on part of the petitioner while getting the erroneous payment, nor
any undertaking taken by the petitioner at the time of erroneous fixation has been brought on record. Point. Therefore, in the considered opinion of this court, the recovery of erroneous payment, that is principal amount of rupees 120028 and interest rupees 91401, total rupees 211429.00. This is to be and is hereby quashed in terms of judgment of the Honorable Apex Court in 2015 volume 4 SCC 334. So and so, and full bench of this court in the NWA 815 of 2017. Point. Therefore, the recovery of excess payment to the tune of rupees 211429 deserves to be and is hereby set aside. Next, so far as the amount of various advances taken by the petitioner is concerned, the amount remaining to be recovered from the petitioner is rupees 39002 only, which can validly be recovered from the petitioner in terms of Rule 65 of MP Civil Services Pension Rules 1976. Point. Therefore, it is held that the respondents are at liberty to recover only an amount of rupees 39002 from the petitioner from the amount of gratuity withheld by them, and they are bound to release the entire amount of gratuity apart from rupees 39002. Point. Next, so far as the interest part is concerned, it is seen that the petitioner has cleared the miscellaneous advance of rupees 161,914. So far interest part is concerned, the usual course would have been to award interest on the entire amount of gratuity from 30/4/2010 till actual payment. Point. However, in view of the peculiar facts of this case, some different methodology needs to be adopted. Point. The petitioner cleared the miscellaneous advance of rupees 161,914 on 5/4/2019. Point. Therefore, it is held that the petitioner will be entitled to interest on the entire amount of gratuity, except rupees after recovering rupees 39002.00 bracket closed, with effect from 30/4/2010 till actual payment. Point. However, on the amount of rupees 161,914, he would be entitled to interest only from 5/4/2019 till actual payment. Point. Next, so far as the amount of erroneous fixation is concerned, the petitioner ये आपसे रिकवरी कब ऑर्डर की है? ये सर 2012 8909 है मतलब नेक्स्ट P1. The petitioner, it's a PPO, P2. the petitioner would not be entitled to interest on this amount, which has been recovered from gratuity from the date of issuance of PPO, that is 8/5/2012 till date of this order. Point. However, from date of retirement up to 8/5/2012 and from the date of this order, the petitioner would be entitled to interest on this amount also. Point. The rate of interest looking to the retirement of the petition in the year 2010, the interest be paid at the rate of 8% per annum. Next, let the principal amount of gratuity along with interest be paid to the petitioner within a period of 3 months
from today, failing which the entire amount of gratuity will carry interest at the rate of 12% per annum after expiry of 3 months from today till actual payment. Both discussed. My lord, Both discussed. the जी last submission, my हाँ lord. The rule 65 is not applicable to the retired employees. My lord. This it has been held in the 39,000 रुपए के लिए कितना कंटेस्ट करेंगे आप? कंटेस्ट नहीं करता सर, वो एक लॉ पॉइंट है उसपे मैं बोल आपकी रहा 15 साल से ग्रेचुटी रुकी पड़ी थी. Sir. You should be happy it is released हूँ. in your lifetime at least. एडवांस है, एडवांस तो आपको देना ही पड़ेगा. इट्स लाइक अ लोन. इसमें क्या इसमें सर वो इन केस ऑफ एडवांस देयर इज नो लिमिटेशन. देयर विल बी नो लिमिटेशन. इट्स Sir, लाइक अ लोन. एडवांस में भी सर जो फुल बेंच का डिसीजन है हम्म. उसमें रूल 65 को कह दिया इट विल नॉट एप्लीकेबल आफ्टर द रिटायरमेंट. सो एडवांस पेमेंट विल ये आल्सो तो रिटायरमेंट के समय एसेस होते हैं. आपने कब कहाँ एडवांस ले रखा है. ये तो सर ये तो जब पेंशन पेपर प्रिपेयर होते हैं तभी देखा जाएगा. इसमें सर इन्होंने 2 साल बाद किया है, तो कोई टाइम लिमिट का सर मेरा ठीक है. इसको टेस्ट